have some past paper questions, right? So let's have some past papers questions practice ताकि थोड़ा बहुत handy हो जाए past papers आपके लिए, because definitely चीज पढ़ लेना at something different and do some past papers is something different. So we are going to start with few examples of past papers और फिर उसके बाद फिर हम चलेंगे आगे next chemical property पर. फिलहाल हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ा है, तो सिर्फ हम उसी का पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे, उसके अलावा कोई पास्ट पेपर्स हमें सॉल्व नहीं करने हैं. राइट नाउ यू कैन सी दिस, दे आर सेइंग दैट कोल्ड डाइल्यूट कैमरा 4, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस बिकॉज़ हमने इसका पास्ट पेपर्स किया ही नहीं है, ठीक है ना. तो इसका भी हमने नहीं करना, जब हम कर लेंगे उसकी बात करेंगे. ये भी हॉट कैमरा 4 वाला भी हमने नहीं किया, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस राइट नाउ, बट द बी पार्ट वी कैन सॉल्व दिस. Actually, I just want to show you this mechanism. You can see this, that it is of 3 marks. We talked about this in the last class, right? Or your 3 marks. What you need to do, just you need to complete the mechanism over here. कैसे करेंगे बच्चों? We know that the double bond is going to attack on bromine, and this bromine is going to broken down, right, heterolytically. And over here we have what? Carbon-carbon single bond, and one of the carbon have bromine and the second will be positive, right बच्चों? यही सीखा था हमने. Yes. Then the rest of the things are on their places, right? And you know that, और जो दूसरा वाला bromine है बच्चों, it will receive a lone pair and it become negative, and now it will attack on this positive charge, right or not? So आप देखें, इसको बनाने के लिए आपको कितना टाइम लगा. आपको मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं लगे होंगे और आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे इसके. एंड यू जस्ट नीड टू कीप रिमेंबर दिस बच्चों, दैट व्हाट यू नीड टू थिंक अबाउट दिस इज कर्ली एरोज. अगर आप कर्ली एरोज को प्रॉपर नहीं बनाते हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा. 1 2 3, वी हैव 3 कर्ली एरोज ओवर हियर. तो कर्ली एरो हैव देयर ओन मीनिंग्स, राइट? का मतलब है डोनेशन ऑफ लोन पेयर, एंड इफ यू आर नॉट ड्राइंग दिस एज अ कर्ली तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे फिर, ठीक है ना. Then lone pairs, just look at over here about lone pairs. So you need to show this lone pair as well. It's very important. And then charges, this negative charge and this positive charge is very important over here. So we have these 3 marks for these 3 things. 1 mark for charges, 1 mark for lone pair, 1 mark for curly arrows. 3 marks for this. Is that clear, bacho? Okay, yes, so let's move on. What we were talking about in the last class, we were talking about electrophilic addition reaction. We were talking about electrophilic addition reaction. हम बात कर रहे थे electrophilic addition reaction की, and this is the property of what? This is the property of alkenes. This is the property of alkenes because we know that alkenes have carbon-carbon double bond, so they shows what? Electrophilic addition reaction. Last classes में अगर आपको याद हो तो वी वर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. हमने किसके साथ रिएक्शन कराया था? हमने एल्कीन का रिएक्शन कराया था. किसके साथ बच्चों? HCl के साथ. आप इसका रिएक्शन HCl के साथ करा सकते हो, इसका रिएक्शन आप HBr के साथ भी करा सकते हो, और इसका रिएक्शन आप ब्रोमीन टू ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ भी, ब्रोमीन टू ब्रोमीन बॉन्ड के साथ, यानी कि ब्रोमीन के मॉलिक्यूल के साथ भी करा सकते हो इफ इट इज इन लिक्विड स्टेट, राइट? तो ये 3 चीजें हमने की थी. साथ साथ आप जो है इसका रिएक्शन पानी के साथ भी करा सकते हो. द रिएक्शन विल रिमेन सेम. यहाँ पर ये partial positive, partial positive, partial positive, partial positive, and these are will be partial negative, partial negative, partial negative, partial negative. So the reaction will remain same. Or even you can react it with BrCl. अब BrCl में दोनों ही halogen है, so which one will be partial positive and which one is partial negative? So you need to keep remember the one which is more electronegative will be partial negative. So chlorine की electronegativity ज़्यादा है, तो it will be partial negative, and bromine will be partial positive. तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड ब्रेक होकर इन सब पर अटैक कर सकता है. It can attack on this, 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 and it can even attack on this. तो ये सब ही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो कर सकते हैं. You need to keep remember, इन सब के अंदर ही क्या होगा? आपके पास कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड टूट जाएगा, and this hydrogen will remain on place, this hydrogen will on place. ये सब अपनी जगह रहेंगे. एक कार्बन पॉजिटिव बन जाएगा, और यहाँ पर आपके पास अगर BrCl है तो Br लग जाएगा. अगर यहाँ पर आपके पास HCl या HBr है तो आपके पास H लग जाएगा. यहाँ अगर आपके पास अगर Br है तो Br लग जाएगा. तो ये कंडीशन हो सकती है. यू नीड टू कीप रिमेंबर कि अगर आपके पास HCl है तो H लगेगा, HBr है तो H लगेगा, H2O है तो भी H ही लगेगा, या अगर आपके पास Br2 है या BrCl है तो आपके पास Br लग जाएगा.
ठीक है ना। और दूसरा वाला आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर हाइड्रो ऑक्साइड भी अटैक कर सकता है, ब्रोमीन भी अटैक कर सकता है, क्लोरीन भी अटैक कर सकता है। दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कीप रिमेंबर। तो अगर मैं इसको आपको इस तरह बना के दिखाऊं, for suppose we have carbon carbon double bond, this is hydrogen, this is hydrogen, this is hydrogen, this is hydrogen। अगर मैं इसका रिएक्शन बच्चों किसके साथ करा दूं, फॉर एग्जांपल इफ आई एम रिएक्टिंग विद HBr, अगर मैं रिएक्शन HBr के साथ कराऊंगा, so you need to keep remember कि आपके पास डबल बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद एक जगह पर H और दूसरी जगह पर Br लग जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट, राइट? फॉर सपोज इसका रिएक्शन बच्चों मैं करा देता हूँ किसके साथ, इसका रिएक्शन फॉर सपोज मैं करा देता हूँ HCl के साथ। सो यू नीड टू कीप रिमेंबर कि आपके पास जो डबल बॉन्ड होगा वो ब्रेक हो जाएगा, बाकी सारी चीजें अपनी जगह लगी रहेंगी। अब यहाँ पर क्या होगा, एक जगह H लग जाएगा, एक जगह Cl लग जाएगा। इज दैट क्लियर? नाउ फॉर सपोज अगर मैं इसका रिएक्शन किसके साथ कराता हूँ बच्चों, ब्रोमीन लिक्विड के साथ। यू नीड टू कीप रिमेंबर दिस, ब्रोमीन लिक्विड है, पानी नहीं है, यहाँ पर किसी तरह का पानी नहीं होना चाहिए। और यू कैन इवन से दैट ब्रोमीन इन इथेनॉल, ठीक है ना, पानी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए उसका मैं आपको अभी आगे बता देता हूँ। ब्रोमीन इन इथेनॉल अगर आप यूज करते हो और बच्चों क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूट जाएगा, हाइड्रोजन्स दे आर ऑन देयर ओन प्लेसेस, देयर इज नो चेंज इन हाइड्रोजन्स, बट on both the carbons you will have what, bromine, ठीक है। सेम एज इट इज if you have the reaction with BrCl, यहाँ पे क्या होगा, आपके पास कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड टूट जाएगा, हाइड्रोजन will be on their places, right? There is no change for hydrogen, but there is a change for Br and Cl. There will be Br and Cl. And the last thing is, for suppose you have the reaction with water. So water के साथ reaction भी आपके पास, it is also going to show what, electrophilic addition reaction बच्चों। बस आपने याद रखना है कि ये होता है 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 100 एटमॉस्फेरिक पर प्रेशर पर, और इसमें यूज होता है डाइल्यूट फॉस्फोरिक एसिड। तो यहाँ पर ये पानी लिक्विड की फॉर्म में नहीं होता, स्टीम की फॉर्म में होता है। Then the bond is going to be broken down, hydrogen will be on their places, right? There is no change for hydrogen, but there is one H and OH over there. Is that clear, every one of you? These five reactions should be clear for you or not? These are all same electrophilic addition reactions, right? आपने सब में याद रखना है electrophilic addition reaction होगा। You can remember this as well। यहाँ पर major और minor का issue आएगा। You need to keep remember major and minor for this. You need to keep remember major and minor for this. यहाँ पर आपको याद रखना है that secondary or tertiary carbocations have more inductive effect, so they will form major products, right? यहाँ पर आपको याद रखना है major और minor का issue, right? अगर आपके पास सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बोकैटाइन बनेंगे तो यहाँ पर आपको मेजर और माइनर याद रखना है। There is no problem with this। यहाँ मेजर और माइनर का इशू नहीं है, यहाँ मेजर और माइनर का इशू नहीं है। Is that clear, every one of you? Is this clear? Yes. अब देखें, ये मुझे बताने का मकसद सिर्फ इतना था ताकि आपको ये याद हो जाए कि फॉर सपोज अगर मैं आपसे बोलूं मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन, फॉर सपोज इफ आई आस्क फॉर द मैकेनिज्म, so you need to keep remember the mechanism for this reaction। for suppose आपके पास है C3H6 and it is reacting with water to form what, C3H7OH। this is the formation of propanol, and I told you that we can use dilute phosphoric acid over here as a catalyst, and the temperature for this reaction is 350 degrees centigrade and 100 atmospheric pressure, right? So इसका mechanism कैसे होगा, you need to keep remember that carbon carbon double bond is here। on one carbon we have 2 hydrogen and one carbon we have CH3 and hydrogen, this is propene, right? So for example if you are reacting it with water, so we know that hydrogen over there is partial positive and hydroxide is partial negative, so this carbon attack, double bond attack on this hydrogen, and then this bond broken down electrolytically, and what happened बच्चों, अब यहाँ पर मेजर और माइनर का इशू नहीं है। पानी के साथ जब रिएक्शन हो रहा है, अल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही है, तो मेजर माइनर का इशू नहीं है। So you can write or you can adjust hydrogen anywhere, but again I just want to show you
over here hydrogen, right? और ये बन गया partial आपके पास complete positive, right? When it is complete positive, so hydroxide is negative by the gain of electron pair. Now it will attack on this और अगले step में hydroxide भी यहाँ पर attach हो जाएगा. This will be the mechanism. So you need to keep remember कि आप mechanism को उसी तरह कर सकते हो जो कि मैंने आपको बताया है. Is that right, बच्चों? ठीक है ना. तो this is what, this is one propanol. इसका नाम होगा one propanol because it is 3 carbon alcohol, so it is propanol and the hydroxyl is on first carbon, so this is one propanol. और अगर आप इसको दूसरी तरह से बनाते तो it will be, यहाँ पर आ जाता hydroxyl, so this will be what, 2 propanol. तो इसका नाम क्या होता, आपके पास 2 propanol होता because it is on the second carbon, so it is 2 propanol. Am I clear to every one of you? Yes. Yes, sir. Now I think so it is much better and much clear for you this mechanism. अब मैं आपको दिखा देता हूँ वो bromine वाली बात, ठीक है ना. For suppose if you have carbon carbon double bond and over here we have these hydrogen, and for suppose we have bromine molecule, right? Over here we have induced dipole, so somewhere it is from partial positive and it will form partial negative. Now we know that double bond will attack on this and this bond break hydrolytically, and over here what you will observe that the double bond is broken down and the bromine is adjusted over here on any one of the carbon, right? Because both are the bromine, so there is no issue for major and minor. You can adjust bromine anywhere. Now this become positive and bromine by gain of lone pair it has become negative. Now it attack on this positive और आपके पास क्या होगा बच्चों, आपके पास नेक्स्ट स्टेप में ब्रोमीन एडजस्ट हो जाएगा. Is that clear or not? हमने यही मैकेनिज्म किया था ना अभी. तो ब्रोमीन सिंपल, यहाँ पर ब्रोमीन लिक्विड है, यहाँ ब्रोमीन कैसा है, ब्रोमीन लिक्विड. फॉर सपोज आपके पास क्या होता, आपके पास ब्रोमीन होता एक्वस. अगर आपके पास ब्रोमीन होता एक्वस तो क्या होता, देयर इज अ डिफरेंस. अगर आपके पास ब्रोमीन एक्वस होता, ठीक है, फॉर एग्जांपल ब्रोमीन तो अपनी जगह पर मौजूद है, कोई इशू नहीं है. स्टार्ट में यहाँ पर कार्बन ने इस पर अटैक किया, दिस बॉन्ड ब्रेक्स, स्टार्ट में कोई इशू नहीं है, ठीक है ना. आपके पास दोनों कार्बन में से एक कार्बन पे ब्रोमीन अटैच हो गया, दैट्स फाइन, नो इशू विद दैट, राइट. और ये वाला कार्बन बन गया आपके पास पॉजिटिव, दैट्स आल्सो फाइन, नो इशू. बट द प्रॉब्लम इज दिस इज ब्रोमाइड बाय द लोन पेयर, ब्रोमाइड नेगेटिव, एंड वी हैव वाटर ओवर देयर एज वेल. अब ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो आपके पास पॉजिटिव बन गया है, यहाँ पर ब्रोमाइड नेगेटिव आयन मौजूद है, दैट्स फाइन. लेकिन यहाँ पर वाटर भी मौजूद है. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर वी हैव हाइड्रोक्साइड ओवर देयर एज वेल. और हाइड्रोक्साइड को अगर आप देखते हो तो इट हैज 3 लोन पेयर्स. इट इज मोर गुड टू लूज लोन पेयर. तो अब यहाँ पर होगा क्या, अगर ब्रोमाइड और हाइड्रोक्साइड दोनों एक साथ मौजूद होंगे तो हाइड्रोक्साइड अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा और यहाँ पर आपके पास ब्रोमीन की जगह हाइड्रोक्साइड एडजस्ट हो जाएगा. तो दिस इज द केस, यू नीड टू कीप रिमेंबर कि जब कभी भी आप चाहो कि ब्रोमीन दोनों कार्बन पे लग जाए, सो यू नीड टू यूज लिक्विड ब्रोमीन, you need to use bromine in ethanol. वहां पानी नहीं होना चाहिए. अगर पानी होगा, so this will happen. Is that clear, every one of you? This is for liquid bromine and this is for aqueous bromine. Yes, but so is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Now you can even add one more reaction over here. If you talk about this picture, so we can even add one more reaction over here, and this is actually aqueous bromine. So for suppose if we have a reaction of this with aqueous bromine, so we need to keep remember that the double bond is going to be broken down, and at one carbon it will be bromine, at one carbon it will be hydroxide, right? So these are 6 different reactions of alkene during electrophilic addition reactions. Yes, bacho, is that clear, every one of you? Yes, bacho, is that clear? Chale, so let's move on with the new chemical property.
Yes, other than electrophilic addition reactions, we have few more chemical properties of alkenes. And right now, I am moving towards reduction, right? This is one of the, you can say that chemical property which you already learned in your O levels. If you remember in your O levels, if you have any alkene, if you reacted with hydrogen, you will get what? Alkane. You will get what? Alkane. And over there in O levels, you were using nickel catalyst over there and 200 degrees centigrade temperature over there as well. So this is one of the chemical property of alkene as well. If you do reaction of hydrogen over there with alkenes, it will form what? Alkanes, right? And we know that addition of hydrogen is reduction. So this is actually the type of reaction. So the very important thing is the type of reaction. So this is actually the type of reaction. This is what you can say that these are actually reagents, right? And this is what? Condition. So the most important thing over here is type of reaction, condition, and reagent, which you need to know for 2 marks or 3 marks in an exam. And this is also one of the important thing over here is conversion. You can see over there that alkene is going to convert it into alkanes, right? So this is also one very important thing over here. Ki alkene alkane mein convert ho raha hai. This is also one of the very important thing, right? So just look at over here. For example, if you have carbon-carbon double bond, right? This is the displayed formula. For example, if you are reacting with the hydrogen molecule, so you need to see this, that this bond is going to be broken down, right? This bond is going to broken down, and this is going to adjusted over here, right, bacho? So this is the displayed form. You can say that over here we have ethene, which is now converted into ethane, and we must need to have nickel catalyst over here along with 200 degrees centigrade temperature, the condition for this reaction, right, bacho? Yes, sir. Right, bacho? Yes, so this is the case. Now, if you want to write down this in the molecular form, so it will be C2H4 reacting with H2 will give you C2H6. You can even write down this in the condensed form as well. Carbon-carbon double bond reacting with H2 will give you what? CH3, CH3. Or you can even write down this in this way as well. Initially, you have carbon-carbon double bond, and now it is converted into carbon-carbon single bond. Am I clear to every one of you? This is one of the very important chemical property of alkenes, right, bacho? Yes. Yes, sir. Acha bete, 200 degree centigrade is the exact temperature for this type of reaction. मतलब सिर्फ इसके लिए, ऐसा नहीं है कि ये सारे रिएक्शंस के लिए 200 सिर्फ इसके लिए। जहां जहां टेम्परेचर की नीड होगी मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा, और फिर आपको वही टेम्परेचर याद करना होगा, ठीक है? फॉर सपोज अगर आप 220 लिख देते हो, 150 लिख देते हो, 170 लिख देते हो, शायद आपको मार्क मिल जाए, उसके कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत गलत लिख देना, यानी कि थोड़ा बहुत टेम्परेचर वेरी कर देने से आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है? बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। फॉर सपोज आपने 200 लिखा हुआ, आप 100 लिख देंगे, so it is completely opposite, or you can say that the half of the requirement, so definitely वो तो गलत हो जाएगा। 180, 190, 210, 220 चलेगा, it will be acceptable in exam, right? Now, the next chemical property of alkene is mild oxidation. You can simply call this as oxidation as well. I'm calling this mild oxidation, and this is the type of reaction, right? This is type of reaction, and what is the reagent that you need to use over here? For this reaction to happen, you need to use what? Dilute KMNO4. You need to keep remember over here we are using dilute KMNO4, or you can say that potassium manganate 7. You must need to use the oxidation state over there, right? Manganate 7. And what is the condition over here? The condition is we should use cold dilute KMNO4.
So these are the things that you need to keep remember initially: the reagent for this reaction, the condition for this reaction, and the type of reaction. इसके marks मिलेंगे आपको, ये आपको याद लाजमी करना है, ठीक है ना? So what is the new thing in this reaction? So बच्चों, for suppose we have carbon double bond, right? And over here we have hydrogen, and let's change this. Over here we have CH3. For example, if I am reacting this with cold dilute KMnO4, so what will be the product? Just remember this, but the double bond is going to be broken down. The CH3 will on this own place, H is on its own place, hydrogen is on its own place, hydrogen is on its place, right? The only change is this: you will see that there's this cold dilute KMnO4. Whenever you are going to use cold dilute KMnO4, the double bond is going to be broken down, and on both the carbon there will be hydroxide, which is going to be added, right? So that is why the reaction is oxidation. Is that clear, bacho? Yes. This is one more reaction that you need to keep remember for alkenes, right? Excuse me, sir. जी बेटे, सर इसका नेम क्या होएगा? इसका नाम है ना ऑक्सीडेशन, या इसका नाम पूछ रहे हैं आप? जी सर, इसका मॉलिक्यूल का नाम पूछ रहे हैं, तो आप इसको बोल सकते हैं, you can call this वैसे डाइओल हमारे सिलेबस में नहीं है, but if you want to name this, you can see this, we have 3 carbons over here, right? So you can say that propane, you can call this as propane, and we have 2 hydroxyl over there, so you can say that propane 1,2 diol. This is propane 1,2 diol. We have 2 ols, right? ठीक है भाई? Yes, everyone, is that clear? yes sir. Why I'm emphasizing you to remember this thing, but so this is what dilute KMnO4. This is what dilute KMnO4, and the condition is cold. We have one more reaction. We have one more reaction, which is known as strong oxidation, and in strong oxidation, bacho, the reagent is again the same thing. The reagent is over here KMnO4, but it should be concentrated KMnO4. The reagent will be concentrated KMnO4, and the condition will be hot. You need to use hot concentrated KMnO4, and the observation, the formation, and the intensity of the reaction, everything will be different over there then, right? So you need to keep remember there are 2 types of reactions of KMnO4. One is with dilute cold KMnO4 and one is concentrated and hot KMnO4. You just need to see over there कि एक ठंडा है तो एक गर्म है, एक में कम KMnO4 लिया है तो एक में ज्यादा KMnO4 लिया, तो there will be a huge difference of the reaction, right? तो अभी आपके पास मैं इसको नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपके पास एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, कीटोन बनते हैं, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन की बात यहाँ पर आ जाती है, तो मैं इसलिए नहीं आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप परेशान हो जाएंगे इसको देखकर, तो ये हम एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ते वक्त ही करेंगे। जी, कोई सवाल पूछ रहा था मुझसे? सर कंसंट्रेशन तो कंपाउंड पे डिपेंड करती है ना? कंसंट्रेशन कंपाउंड पे डिपेंड करती है मतलब? यानी कि कंसंट्रेटेड हम ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन में, देन इट डिपेंड्स ऑन द कंपाउंड ना कि हम किससे रिएक्ट कर रहे हैं। देखो कंसंट्रेटेड का मतलब ये देखो KMnO4 भी तो एक खुद कंपाउंड है ना, KMnO4 भी तो एक खुद कंपाउंड है ना, और KMnO4 आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना, बहुत अच्छे से ऑक्सीडेशन करना जानता है। अब अगर फॉर सपोज आपने बहुत सारा पानी लिया और उसके अंदर आपने थोड़ा सा KMnO4 डाल दिया, लाइक जस्ट आपने उसमें एक पिंच KMnO4 डाल दिया, तो पानी ज्यादा है KMnO4 कम है, तो वो जो सॉल्यूशन आपके पास KMnO4 का होगा ना वो डाइल्यूट होगा,
फॉर सपोज आपने एक जहां पानी ज्यादा लिया और वहां पर आपने पूरा एक चमचा KMnO4 का डाल दिया 1 टीस्पून, तो वहां KMnO4 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, तो KMnO4 के मॉलिक्यूल ज्यादा हो गए। जब KMnO4 के मॉलिक्यूल ज्यादा हो जाएंगे तो इंट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, जब इंट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा तो ऑक्सीडेशन ज्यादा हो जाएगी, राइट? यस। ओके, सो बच्चों ये वाला मैं अभी आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट के बाद वाले चैप्टर में। सो आपको वहां समझ में ज्यादा अच्छा आ जाएगा जब आपको पता ही नहीं है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, तो ये पढ़ाना अभी आपके लिए सेहत के लिए मुद्दे है आपकी। तो वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर ऑन। इस वाली केमिकल प्रॉपर्टी को हम करेंगे बाद में। लेट्स सी हमें अभी क्या क्या आ गया, ठीक है? लेट्स टॉक अबाउट एल्कीन। बच्चों यू नीड टू कीप रिमेंबर अबाउट एल्कीन्स। अगर आप अल्कीन्स, आपके पास अल्कीन है और अल्कीन में राइट नाउ वी हैव जस्ट व्हाट, इथीन। अगर मैं इथीन का रिएक्शन आपके पास कराऊं HBr से, तो आपको पता होना चाहिए आपके पास क्या बनेगा। अगर मैं इसका रिएक्शन HCl से कराऊं तो आपको पता होना चाहिए क्या बनेगा। इसका रिएक्शन अगर मैं ब्रोमीन लिक्विड के साथ कराऊं तो आपको पता होना चाहिए क्या बनेगा। अगर इसका रिएक्शन मैं ब्रोमीन एक्वस से कराऊं तो आपको पता होना चाहिए क्या बनेगा। अगर इसका रिएक्शन मैं BrCl से कराऊं, सो यू नीड टू कीप रिमेंबर कि बनेगा क्या। अगर मैं इसका रिएक्शन फॉर सपोज वाटर यानी कि स्टीम के साथ कराऊं अलोंग विद डाइल्यूट फॉस्फोरिक एसिड, सो यू नीड टू कीप रिमेंबर कि इसमें क्या बनेगा। अगर मैं इसका रिएक्शन फॉर सपोज हाइड्रोजन के साथ कराऊं अलोंग विद निकल कैटलिस्ट, तो आपको पता होना चाहिए इसमें क्या बनेगा। अगर मैं इसका रिएक्शन बच्चों डाइल्यूट KMnO4 के साथ कराऊं तो आपको पता होना चाहिए इसमें क्या बनेगा। और अगर इसका रिएक्शन मैं सिर्फ क्लोरीन लिक्विड से कराऊं तो आपको पता होना चाहिए इसमें क्या बनेगा। यस, बना सकते हैं आप लोग? यस सर। देखें अभी बहुत सारी चीजें मैं पहले सिंपल तरीके से आपको करके दिखाता हूँ। देखें अगर फॉर सपोज अगर मैं सिर्फ ब्रोमीन लिक्विड से रिएक्शन कराऊं तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विल बी ऑन देयर प्लेस, हाइड्रोजन अपनी जगह रहेंगे, यहाँ दोनों जगह Br लग जाएगा। दैट्स प्रीटी सिंपल, राइट? क्लोरीन लिक्विड से कराओगे तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अपनी जगह रहेगा, हाइड्रोजन अपनी जगह रहेंगे और दोनों पर क्लोरीन लग जाएगा। दैट्स प्रीटी सिंपल। HCl से कराओगे तो एक जगह हाइड्रोजन और एक जगह Cl लग जाएगा, बाकी हाइड्रोजन अपनी जगह पर। HBr से कराओगे तो हाइड्रोजन अपनी जगह पर, एक पर H और एक पर Br लग जाएगा, राइट? और अगर आप BrCl से कराओगे तो एक पर Br और एक पर Cl लग जाएगा, हाइड्रोजन विल देयर ओन प्लेसेस, राइट? हाइड्रोजन से कराओगे तो ये तो बहुत ही सिंपल है, डबल बॉन्ड टूटेगा, दोनों पर ही हाइड्रोजन लग जाएगा, ठीक है? अब यहाँ अगर रिएक्शन कराओगे तो डबल बॉन्ड टूटेगा, एक पे हाइड्रोजन और एक पे हाइड्रोक्साइड लग जाएगा, राइट? ये हो गया। यहाँ आपने याद रखना है कि अगर आप ब्रोमीन एक्वस यूज करते हो तो ब्रोमीन तो लग जाएगा, लेकिन दूसरी जगह पर आपके पास हाइड्रोक्साइड लगेगा, हाइड्रोजन अपनी जगह रहेंगे। यहाँ पर आपने याद रखना है कि कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 है तो हाइड्रोजन अपनी जगह, और दोनों ही जगह पर क्या लग जाएगा आपके पास, हाइड्रोक्सिल लग जाएंगे। So these are the all reactions that you need to keep remember. Still one of the reaction is missing over here, और वो रिएक्शन कौन सा है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, जो कि अभी हमने नहीं किया है। उसके अलावा एक रिएक्शन और है जो कि पॉलीमराइजेशन है, हम इसके बाद कर लेंगे वो। अभी फिलहाल मुझे ये बताएं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई या नहीं? यस बच्चों, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस। देखें यहाँ पर इस रिएक्शन को हमने बोला था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। This is electrophilic addition reaction. This is electrophilic addition reaction. This is electrophilic addition reaction, and this is oxidation. You need to keep remember the type of reaction. And this is what? Reduction. This is also electrophilic addition reaction. This is also electrophilic addition reaction. This is also electrophilic addition reaction. सही है ना? तो ये आपने याद रखना है। Type of reaction, it will award you 1 mark in the exam, right? उसके अलावा conditions की अगर बात करें तो मैं conditions को blue से कर देता हूँ। Over here, we know that the condition is 350 degree centigrade temperature and 100 atmospheric pressure. And over here, we have room temperature pressure. And over here, the condition is aqueous. Over here, we have room temperature and pressure. Room temperature and pressure. This is liquid. You can say that when you need to use ethanol over here, right? This is liquid, or this is cold. The condition is cold over here, and over here the condition is 200 degrees centigrade. Is that clear, every one of you? Yes, everyone. Yes. Is that clear?
and the reagents are given to you. These are the reagents. These are the reagents. I already write over there. These are the reagents, right? ये reagent condition और type of reaction पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा. तो ये आपको याद रखना है. किसी भी रिएक्शन का कंडीशन, टाइप और रिएक्शन वो पूछ सकता है, तो ये याद करने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है. आई नो दैट कि बहुत मुश्किल काम है आप लोगों के लिए याद करना, तो इसलिए मैं इसको पहले करा रहा हूँ ताकि आप इसको ऑन द परफेक्ट बेसिस आप इसको याद भी कर सकें. जब ये याद हो जाएगा तो फिर ये बहुत आसान लगेगा आपको. जस्ट लुक एट ओवर हियर, पार्ट A1. बच्चों, कैन यू सॉल्व दिस? What they are saying for 1 mark, they are saying that this is the molecule, right? They are saying give the structure of the organic product of the reaction of H with cold dilute acidified potassium manganate. Can you do this, bacho? What we need to do, we just need to draw the structure completely without double bond, first of all, right? So CH3 is on its place, this CH3 will be on its place, this CH2OH will be on its own place, this CH3 will be on its place. Now, the only difference is you just need to keep hydroxyl over there, right, bacho? Yeah. चलें, ये सब कुछ आपने करना है अपने पास जल्दी से alkene. So बच्चों, if you talk about last chemical property of alkenes after a few past papers questions, let's talk about the last chemical property that is for us right now over here. So last chemical property, I am considering this as a polymerization, and actually it is addition polymerization. So if you remember your O levels stuff, so that was addition polymerization in alkenes. So same as it is over here, this is another chemical property of alkenes, which is actually what? Addition polymerization, right? अच्छा देखें बच्चों, आपको कैसे पता चला कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन? You can see this is actually bromine which is going to be added in the molecule. That is why this is electrophilic addition reaction, and electrophilic addition reaction is always followed by alkenes. So right now this is carbon-carbon double bond, which is actually cycloalkenes right now. So this is the new thing which is अच्छा देखें बच्चों, अगर आप इसके स्ट्रक्चर फॉर्मूला की बात कर रहे हो, देखो कार्बन कार्बन तो हम दिखाते ही हैं, उसके अलावा आप क्या दिखा सकते हो? उसके अलावा आप जो दिखा सकते हैं वो दूसरे एलिमेंट्स आप दिखा सकते हो. तो राइट नाउ these are all carbons, you can see this, these are all carbons, 6 carbons and then 2 bromine attached with 2 carbons. तो ब्रोमीन दिखाओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि आपके पास ये आपके पास डायब्रोमो साइक्लोहेक्सेन है ना, तो आपको बता दिखाना पड़ेगा ब्रोमीन भी वहां पर. ठीक है, ब्रोमीन तो दिखाना लाजमी है. कार्बन के अलावा जो चीजें वहां मौजूद होंगी वो भी आपको दिखाना होगा. जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई और फंक्शनल ग्रुप होगा तो वो भी आप दिखाएंगे. एल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा, अल्कोहल होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, व्हाटएवर द फंक्शनल ग्रुप ओवर देयर, यू मस्ट नीड टू शो ओवर देयर. जो हम चीज छुपाते हैं वो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड. अगर कार्बन और हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड है सिवाय एल्डिहाइड के, तो वो हम छुपा लेते हैं. बाकी सारी चीजें आपको दिखानी होती है. राइट नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स एडिशन पॉलीमराइजेशन. अगर किसी का कोई सवाल है तो अभी भी पूछ सकता है, अदरवाइज फिर मैं मूव करूं. इज देयर एनी क्वेश्चन बच्चों? Yes, Ishma, is that clear your answer? Yes, Abdul Samad, is your question is clear now? Zunaira, Yes, have you sir. done this? Okay, bacho. Chalein. Now let's move towards the last chemical property of alkenes right now. We know that one is still not done, वो हम बाद में करेंगे. But right now this is addition polymerization, which is the last one in today's class. So addition polymerization is what? It is actually the formation of the large molecules from the small molecules. For suppose you have small molecules and they just combine together to form a huge molecule. So this will be known as polymer. So this is actually polymer, which is a large molecule, and these are small molecules known as monomers. So a small molecule is known as monomer and the large molecule is termed as polymer. Just need to keep remember whenever the amount, a huge amount of a small molecule join together to form a single molecule is known as polymerization. And right now you are talking about polymerization of alkenes. So whenever there is a polymerization of alkene, it is due to the presence of carbon-carbon double bond.
and you will see that all the monomers join together to form a single product. So whenever there is a single product, you can call this as an addition reaction. So this is actually addition polymerization because we have a single product. There is no loss of anything over here. Everything is going to join and there will be a one product only at the end. So just look at over here. For suppose I have a molecule of ethane. I have a molecule of ethene. I have a lot of molecules of ethene. I'm just considering two molecules right now. For suppose I have two molecules of ethene right now. And I just provide the conditions to these molecules. And we will see that this bond broken down, this bond broken down. Once these bonds are going to break down, the electrons of these carbons are going to be free. Right? So this carbon bonded with this carbon and this carbon will bond it to any other carbon and this carbon bonded to any other carbon. And in this way, you will find there is a connection. You'll find there is a connection like this, that molecule are going to join together in a large frame, right? So this will be what the polymer means. All the molecules join together to form a single huge giant structure known as what? Known as polymer. So this is the monomer. It is ethene right now. This is ethene monomer, single molecule. A lot of molecules over there join together to form a product, and this is known as what? Polyethylene, which is a polymer right now. Is that clear, bacho? Yes, bacho, is that clear? Yes. Now, what the very big problem for the students is actually the formation of other polymers. All the time you just think about this कि यार polyethylene जैसा ही बना देते हो आप सब, ठीक है ना? तो सबसे बड़ा problem क्या होता है? For suppose if we have propene, so what will be the structure of the polymer of propene? So बच्चों, you just need to keep remember this. For suppose this is the propene molecule. This is actually the propene molecule. So you need to keep remember, first of all, you need to make this a standard form. आप पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, देन आप इसको पॉलीमर बनाओ. आपके लिए आसानी हो जाएगी. डायरेक्टली करोगे या गलत कर दोगे. Just convert this into only carbon carbon bond. Just convert this structure into only carbon carbon bond. For suppose, just look at over here. These are the two carbons जिसके दरमियान डबल बॉन्ड है. तो सबसे पहले यही दो कार्बन बनाओ, तो ये होगा दो कार्बन, right? Just look at over here. On this carbon you have two hydrogens. ठीक है ना? तो इसके ऊपर जो दो हाइड्रोजन है ये बना दो. That's all. अब फिर अगर आप दूसरे वाले कार्बन को देखते हो, इस वाले कार्बन को अगर आप देखते हो, तो इस पे एक हाइड्रोजन है और दूसरा जो बॉन्ड है इसका पूरा CH3 इसके ऊपर लगा हुआ है. ठीक है ना? So you can write like this कि एक हाइड्रोजन है और एक पूरा CH3. So this is actually the standard form of propene. ये बन गया आपके पास propene standard form में. ठीक है ना? स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब ऐसी फॉर्म है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ रहा है खाली आपको नजर. अब आप क्या करो, अगर आप इसका पॉलीमर बनाना चाहते हो, इसका पॉलीमर कैसे बनेगा? You just need to copy down this structure without double bond. Just copy down this structure without double bond and show the continuity bonds. These continuity bonds are very much important for the polymerization structures. अगर आप ये नहीं दिखाओगे तो मार्क नहीं मिलेगा. ठीक है ना? Continuity bond का मतलब है the structure is continuing on both sides and we don't know the number of molecules joined together. A lot of molecules joined together to form a single product. We don't know how many molecules. Maybe 500, 600, 700, 800, 1000, 2000. How many molecules are joined? We don't know. So that is why we can write even n over here. We don't know the number of molecules. If examiner asks you to draw one time, so you can draw it one times. And if examiner asks you to do for 2 times or 3 times repeating unit, so you can draw this 2 times as well. Just draw the same structure 2 times without double bond in the continuity, right? And must show the continuity bond over there. So this will be the continuity bond. Bracket is not important, n is not important, but the continuity bond is very much important. And now this is known as polypropene. Am I clear to every one of you? Yes. Now for suppose if we have butene, and we have 2 types of butene, we know that when we talk about butene, we have 2 types of butene. The one is actually but1ene. But1ene means we have double bond on the first carbon, right? So this is actually 1, 2, 3, 4 carbons. First carbon पे double bond आ गया, ये bonding पूरी कर दी हमने, ठीक है ना? So this will be the structure of but1ene.
तो भाई इसका पॉलीमर बनाने के लिए यू मस्ट नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट। पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लूं। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की फॉर्म में लिखना है। इसके पास 2 हाइड्रोजन है, मैंने बना दिया, ठीक है ना। इसके पास एक ही हाइड्रोजन है, मैंने बना दिया, और बाकी पूरा मॉलिक्यूल है, तो मैंने नीचे एक साथ बना दिया C2H5। जब मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, नाउ इट्स वेरी इजी फॉर मी टू मेक अ पॉलीमर ऑफ दिस। सो आई जस्ट नीड टू ड्रॉ इट twice or thrice molecules with a continuity bond, even one time as well without double bond. This is poly-but-1-ene. Is that clear, bacho? Yes. You can even draw it more than one time. That's not a big deal, right? If the examiner asks you to draw more than one time, so you can draw over there more than one time. Now, if we talk about but-2-ene, bacho, so but-2-ene means we have a double bond between 2 carbons, and 1 carbon will be there, and 1 carbon will be there, and the hydrogen like this. This will be but-2-ene. So if you want to draw the polymer of this, so you just need to copy down without double bond with the continuity bond. This will be but-2-ene ka polymer. This will be poly-but-2-ene. Is that clear, bacho? Yes. Yes, sir. जल्दी से मुझे पैंट 1-ene और पैंट 2-ene के स्ट्रक्चर्स बना के दिखा दीजिए जल्दी से।